Students, today we are going to start with quiz competition from chemistry, and our chapter is chemical kinetics. So let us start with first question. In kinetics, which among the following reaction can be discussed? These are the options in front of you. Let us try to give the answer. Kinetics में कौन से टाइप के रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे? And the answer is option C. So those reaction whose rate can be easily measured, that is moderate rate reaction, can be discussed in kinetics. Let us shift towards next question. The unit of rate constant of first order reaction is. First order reaction rate constant unit you have to find out. These are the options in front of you. The first order reaction में n value हम लोग लिखेंगे वन. So put that value in basic formula so that you will get correct answer. Rate constant is expressed in time raised to minus 1. अगला क्वेश्चन. A first order reaction has half-life time of 14 minutes. How much time would it take to go to 75% completion? First order reaction है, half-life आपको दिया है, 75% completion के लिए जो भी time होगा वो हमें find out करना है. These are the options. सबको पता है 75% के लिए दो टर्म्स जरूरी, तो इसके हिसाब से हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं. And the correct answer is T equal to T half into N. दो टर्म जरूरी, तो 42 का 20 minute time will be required. Next question. In first order disintegration of radio element with half life of 20 minutes, starting with 200 gram, how much amount will left behind after 60 minutes? यहाँ पे भी आपको हाफ लाइफ टाइम दिया है. इनिशियल क्वांटिटी इज गिवन 200 ग्राम आफ्टर 60 मिनट ड्यूरेशन. व्हाट अमाउंट ऑफ रेडियो एलिमेंट लेफ्ट विदाउट डिसइंटीग्रेशन? दीज आर द ऑप्शंस. सो रिमेनिंग अमाउंट आपको फाइंड आउट करना था. सो टोटल टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें n प्लस मिलेंगे. इनिशियल क्वांटिटी आपको पता है, पुट दैट n वैल्यू सो दैट यू विल गेट रिमेनिंग क्वांटिटी. And the correct answer is out of 200 gram, 25 grams left behind without disintegration as n equal to 3 half life turns only. Next question. Which among the following is oblique R correct in case of? So which reaction is given to the students? Decomposition of ammonia into N2NH2 is given. तो correct statement आपको इस reaction के बारे में discuss करना था, identify करना था. First order reaction or zero order reaction that you have to consider first of all decomposition of ammonia into nitrogen and hydrogen. And the correct answer is it is zero order reaction because rate not affected by reactant concentration. The option. Next question. The unit of rate constant of zero order reaction is. These are the four options. Zero order है तो n value हम लोग zero लिखेंगे. Put that value in basic formula. You will get option. So ये आंसर होगा यहाँ पे n equal to 0. So it is expressed in moles per liter per second. Let us shift towards next question. For first order reaction starting with 400 atoms in 10 minutes, 200 atoms left behind without reaction. The value of
is, तो इनिशियल अमाउंट था 400 एटम, उसमें से 10 मिनट के बाद 200 एटम्स बाकी, दिस डू नॉट अंडरगो रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू हमें निकालना है. सो गिवन इंफॉर्मेशन इंडिकेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके हिसाब से पहले T हाफ हम लोग कंसीडर करेंगे एंड पुट दैट वैल्यू अकॉर्डिंगली वी विल गेट रेट कांस्टेंट K एंड द आंसर इज K equal to 0.0693 per minute. अगला क्वेश्चन, catalyst used in the reaction. These are the options in front of you. दिए हुए रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल हमें चेक करना है. सो रेगुलर में भी हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन and the answer is, so catalyst used in the reaction provide alternate path for the same reaction, जहाँ पे activation energy क्या होगा, decrease, जिसके चलते rate of reaction get increase. That is the role of catalyst. अगला क्वेश्चन, in the first order reaction the amount of reactant changes from 800 gram to 50 gram in 2 into 10 raised to 4 second. The value of rate constant of the reaction is, यहाँ पे भी आपको rate constant K निकालना है. This is initial quantity 800 gram, 50 gram remain in this much time, 2 into 10 raised to 4 second. So उसके हिसाब से हमें rate constant K निकालना था. And the correct answer is K equal to 1.386 10 raised to minus 4. तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी दिया था, फाइनल क्वांटिटी दिया था, इसके अकॉर्डिंगली हमने रेट कांस्टेंट K निकाला. अगला क्वेश्चन, in a certain reaction temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the rate of reaction will become. तो आपको पता है for every 10 degree rise in temperature rate of reaction become double. So these are the options in front of you. उसके हिसाब से हम लोग easily आंसर निकाल सकते थे. So 10 degree to 100 degree, any value हम लोग 9 लिखेंगे to 2 raised to 9. So 512 times rate increases. Next question. For the reaction, कौन सा reaction दिया आपको? Decomposition of nitrogen dioxide for NO2 plus O2 will be the product. If concentration of NO2 increase by 5.2 10 raised to minus 3 molar in 100 second, then rate of reaction is, rate equal to आपको पता है, it is first order reaction, so R equal to K into concentration of N2O5. And the correct answer is 1.3 10 raised to minus 5 moles per liter per second. Let us shift towards next question. Very simple, straightforward question. Hydrolysis of ester is what type of reaction? So hydrolysis of ester दिया है आपको, तो यहाँ पे concentration किसके ऊपर डिपेंड है? Concentration of ester and water present in excess, it is not going to affect rate of reaction. So it is obviously become what type of reaction? First order. It is also known to be bimolecular first order reaction, that is pseudomolecular. Next question. Half-life period of first order reaction is 1386 seconds. The specific rate constant of the reaction in per second is, आपको rate constant निकालना है. half-life time दिया आपको first order reaction 1386 सेकेंड. तो first order के लिए आपको relation पता है, K equal to 0.693 upon T half. T half आपको दिया था, उसके हिसाब से हमें rate constant K मिलेगा second raised to minus 1. So 5 into 10 raised to minus 4 per second. अगला क्वेश्चन,
For reaction between A and B, the order with respect to A is 2. With respect to reactant A, order is 2, and with respect to another reactant B, order is 3. The concentration of both A and B are double. This is condition given to you. The rate of reaction will increase by the factor of. तो सबसे पहले तो आपको रेट लॉ सेट करना जरूरी as per given condition, order with respect to A and B. So correct answer is, सबसे पहले तो हमने रेट लॉ लिखा, उसके बाद कंडीशंस पुट अप किए, तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 32. Shift towards last question. What is given to you? If 60% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of same reaction would be completed in approximately. तो 60% completion के लिए आपको टाइम दिया था 60 मिनट, हाफ कंप्लीटेड, यानी 50% कंप्लीशन के लिए टी हाफ हमें निकालना था. तो सबसे पहले हम लोग रेट कांस्टेंट के निकालेंगे, इसका वैल्यू यूज करके हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते थे. सो करेक्ट आंसर इज टाइम टी इक्वल टू 45 मिनट्स. के वैल्यू निकाला, और दैट वैल्यू यू विल गेट हाफ total time required for 50% completion, that is टी हाफ.